अब अगर आप सेक्शन नंबर 22 ऑफ बीएनएस देखोगे, यहाँ पे वी सॉ दैट एन एक्ट ऑफ एन अनसाउंड पर्सन विल नॉट बी एन ऑफेंस। अगर एक अनसाउंड पर्सन कोई क्राइम को कमिट करता है तो यहाँ पे उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे, बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट हैव द मेंटल कैपेसिटी, he does not have the mental capacity to judge right and wrong, and that is why it is presumed that these people can do no offense. आपको ये भी याद रखना है that the maxim on which section number 22 is based upon is non-compos mentis, that is a person who is not present at a given place, the person who is not present at a given place mentally, यानी एक पर्सन फिजिकली तो एक जगह पे मौजूद है बट मेंटली वो उस जगह पे मौजूद नहीं है, ऐसा पर्सन क्राइम को कमिट नहीं कर सकता। अब हमको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। हमको याद रखना है दैट बिफोर 17th century दिस एक्सेप्शन वाज नॉट देयर। ब्रिटेन में भी ये एक्सेप्शन नहीं होता था बिकॉज इट वाज बिलीव्ड दैट अनसाउंड पर्संस are possessed and that is why उनको इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलता था। अब आप देखोगे 17th century से पहले डार्क एज होती थी, there was dark age before the 17th century and those were very superstitious times, but as we entered the modern era and as there were more scientific developments, it was considered that these people are not possessed and they should be treated equally. And after that, this exception was developed by the British courts. Okay. अब हम 4 टेस्ट देखेंगे जो कि ब्रिटिश कोर्ट्स ने propound किए थे। ये 4 टेस्ट हम यूज कर सकते हैं to determine whether a person is unsound or not. First टेस्ट यहाँ पे आता है wild beast test. This test was given in the case of R versus Arnold. In this particular case, Arnold was a person who killed the king. Arnold ने यहाँ पे king को मार दिया था. Okay. In this particular case, it was determined that Arnold was a person of unsound mind. And he acted like a wild beast. Because just like a wild beast, he did not know the consequences of his actions. And that is why, in this particular case, the accused was acquitted. Accused को यहाँ पे acquittal मिल गया। अब इसके बाद हमारे सामने 2 टेस्ट आते हैं। एक है insane delusion test, and the next test is Bowler case test. अब जो insane delusion test था, it was laid down in the case of Hatfield के केस में इस टेस्ट को ले डाउन किया गया था। अब इन both of these tests, it is seen that whether the accused had the capacity to judge right and wrong, अगर उसको सही गलत का पता है तो यहाँ पे उसको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी सेक्शन नंबर 23 का बेनिफिट एक्यूज को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसको सही गलत का पता ही नहीं है तो यहाँ पे ही कैन गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन नंबर 23 ऑफ BNS। अब इसके अलावा देयर इज अ लैंडमार्क केस ऑफ M. Norton। ओके, एंड यहाँ पे हमारे सामने M. Norton टेस्ट आता है। अब द जजमेंट इन दिस केस वाज गिवन बाय चीफ जस्टिस टिंडल। Tyndall gave the judgment, and जो सेक्शन नंबर 84 ऑफ IPC था, जिसका एसेंस अब सेक्शन नंबर 23 में गिवन है, the section number 84 of IPC was based upon this particular case. You can write this, that section number 84 of IPC was based upon first and second propositions of this particular case. And BNS में कोई change नहीं आया यहाँ पे, so we can say that in BNS as well same propositions are applied. अब हमको पता होना चाहिए that on what all 2 propositions in the McNaughton case. Section number 84 of IPC is based upon. अब first proposition थी every person is sane unless the contrary
is proven. यानी कोर्ट अब एज्यूम करेगी कि एक्यूज इज अ सेन पर्सन एंड अब एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनसेन था एट द टाइम ऑफ क्राइम. अब यहाँ पे द सेकेंड प्रोपोजिशन वाज दैट द पर्सन मस्ट बी unsound at the time of commission of crime. यानी क्राइम की कमीशन के टाइम पे एक्यूज मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, तभी उसको एक्सेप्शन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. अब इन दिस पर्टिकुलर केस द एक्यूज्ड वाज इन insane delusion. The accused was in insane delusion that the British PM Robert Peel has caused great harm to him. यहाँ पे जो एक्यूज था उसको लगता था कि जो ब्रिटिश पीएम है इसने मेरे को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया है. एंड यहाँ पे ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड. एक्चुअली ब्रिटिश पीएम ने सो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया था, बट सिंस दिस एक्यूज वाज ऑफ अनसाउंड माइंड दैट इज व्हाई ही बिलीव्ड दिस थिंग. अब इस इल्यूजन में द एक्यूज tried to kill the British PM. He tried to kill the British PM, but instead of the British PM, he killed the private secretary. He killed the private secretary of the British PM. Now, in this particular case, court looked at the previous history. Court looked at the previous history of the accused, and the court concluded. The court concluded that the accused was of unsound mind. The accused was of unsound mind, and therefore he was acquitted in the case. हमको यहाँ पे याद रखना है that if a person is found to be of unsound mind, then in that particular case his trial will proceed. According to section number 367 of BNSS to section number 378 of BNSS. अब on this law point we have 3 Indian cases as well. First case is Ashiruddin अहमद वर्सेस स्टेट. अब इस केस में क्या होता है, देयर वाज अ फादर, ही हैड अ ड्रीम दैट ही मस्ट सैक्रिफाइस हिज ओनली चाइल्ड बिहाइंड मॉस्क. ही सेड दैट गॉड हैड टोल्ड हिम टू डू सो इन हिज ड्रीम. अब यहाँ पे एक्यूज का कहना था कि भगवान उसे ड्रीम में आए थे एंड उन्होंने उसको बोला था कि अपने बच्चे को आप सैक्रिफाइस कर दो. अब in this particular case, the accused was acquitted of the case. Because the court believed that. The accused was of unsound mind. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है फूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का. अब in this particular case, a lady tried to attempt suicide. With her child. अपने बच्चे के साथ एक लेडी सुसाइड करने के लिए जाती है. अब यहाँ पे लेडी तो बच जाती है, बट चाइल्ड की यहाँ पे डेथ हो जाती है. द चाइल्ड वॉज डेड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, बट द लेडी वॉज सर्वाइव्ड. अब इन दिस पर्टिकुलर केस द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूड दैट द लेडी हैड नो मेडिकल हिस्ट्री of unsoundness of mind. But here the court held that medical prescription is not required in this case. Medical prescription of unsoundness is not required in this case, and the act of the lady is proof of her unsoundness of mind. यानी यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ी. कोर्ट ने यहाँ पे बस लेडी के एक्ट को देखा एंड उसके बेसिस पे डिसाइड कर लिया that the lady was of unsound mind. अब यहाँ पे हमारे सामने एक और केस आता है तो कप्पा तमन्ना लिंगाड़ी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अब in this particular case there was a woodcutter and her sister was eve teased. अब यहाँ पे जिस पर्सन ने eve teasing करी थी उसके पास ब्रदर जाते हैं एंड उसको वो मार देते हैं. The accused killed the victim in this case and after that started playing with the brain of the victim. यहाँ पे accused ने सिर्फ victim को मारा ही नहीं है बल्कि उसके बाद उसका ब्रेन है उससे वो खेलने लग गया. The accused also tossed the brain 3 times. यानी 3 टाइम accused ने victim के ब्रेन को ऐसे उछाला. अब the court held that this act of the accused
This act of the accused shows that he was of unsound mind. He was of unsound mind and therefore he was acquitted in this case. He was acquitted in the case, but he was sent to the mental asylum. तो ये केसेस हमको यहाँ पे याद रखने हैं with respect to mental unsoundness.